Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Hello everyone. In this session we are going to discuss objectives of business. So there are basically three major objectives of business: economic objectives, social objectives and human objectives. In economic objectives we are going to discuss survival, profit and growth. We know that every business has its own rewards, that is profit. हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कि किस तरीके से बिजनेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए रन करता है। वो प्रॉफिट से ही उसका सर्वाइवल भी जुड़ा हुआ है, उसका ग्रोथ भी जुड़ा हुआ है। फिर प्रॉफिट आएगा तो क्या कर सकता है, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर सकता है। इट कैन आल्सो फुलफिल द objectives of human which are going to work under any business, any employment or any profession. So we are going to discuss this particular topic. What basically objectives are? Objectives are nothing but they are end towards which the activities of business are being directed. See, objectives हर business का होता है। ऐसे अपन भी कुछ काम करते हैं तो हम भी एक गोल लेकर चलते हैं। We also have certain objectives कि हमें in near future हमें ये चीजें करनी है। We aim towards that. So objectives are the end towards which every activity of business are being directed. मतलब उस objective को focus करते हुए, उस objective को conclude करते हुए हमें सारी activities करना है। So these objectives are not been set up in general terms. These objectives are always been set up in specific terms. Like for example, increase in sale by 10% in 1 year of time. तो एक साल के अंदर आपको क्या करना है, सेल्स को 10% से बढ़ाना है। तो ये की स्पेसिफिक हो गया कि आपको सेल 10% से बढ़ाना ही है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द बिजनेसमैन विल ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर बेसिकली थ्री ऑब्जेक्टिव्स: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, social objectives and human objectives. So let's move further to economic objectives first. See, there are basically three, as I have told you on the board, that economic objectives consisted of three objectives: survival, profit and growth. So see, as business is an economic activity, so the most important objective of business are economic objectives. ठीक है, हमने शुरुआत में देखा था कि बिजनेस क्या होता है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे वो होंगे economic objectives. So under economic objectives, these are the following objectives which have been included: survival, profit and growth. Now let's see one by one. Survival. The basic purpose of every organization is to survive and exist in competitive market. So यहाँ पर क्या बात कर रहा है वो, यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो उन बिजनेसेस में आपको अपनी मार्केट स्टैंडिंग रखना है, आपको सर्वाइव करना है लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। ये जब भी पॉसिबल है कि जब कोई बिजनेस जो है उसकी जो कॉस्ट है, जितनी भी लागत उसकी लग रही है, उसको कवर अप करे और जो कॉस्ट के बाद लगने वाला जो उसका पैसा है वो उसको प्रॉफिट कमा कर दे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट. This is the most important objective of every organization, is to earn adequate amount of profit, as profit is essential for survival, growth and expansion. We can also say that profit is reward which has been given to a businessman for bearing risk. So एक particular line है, profit is reward of risk. अगर आपने रिस्क लिया है तो आपको both condition, it can be profit also but it can be loss also. But अगर आपने रिस्क लिया ही नहीं तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। Next is growth. Every business organization must grow and expand their activities. We also know कि हर समय, एक समय आने के बाद एक बिजनेस जो है वो अपनी बिजनेस को बढ़ाता ही है, ग्रो करता ही है, एक्सपैंड करता ही है। So the success of every business या every organization is been measured by the growth rate and growth. It is also been measured in terms of various factors. The factors can be of in terms of sales, as we have seen already कि एक एग्जांपल लिया था, increase in sales by 10% in a particular year, या फिर उस बिजनेस की नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाए या उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बढ़ाए। जैसे फॉर एग्जांपल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, ये ऐसी पर्टिकुलर MNC से कंपनी से जो क्या करती है, बहुत सारी डिफरेंट वेरियस प्रोडक्ट लाइंस में डील करती है। तो उससे उनका डाइवर्सिफिकेशन पता पड़ता है कि ये कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितनी ग्रोड। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज़्यादा है मतलब कंपनी बहुत बड़ी है। सो दिस ऑल आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. वी हैव स्टडीड सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सी, social objectives are there are five social objectives in which everything has been compiled regarding society.
First is supply of desired quality of products. Now see, customers always prefer to buy the products only when they are very satisfactory in quality or they are available in reasonable price. Two things are there, one is price and another one is quality. So if we talk about today's consumer is very rational, he is very quality conscious, or we should say he expects the money's value which he is going to give. सो क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. एक प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी दूसरी हो सकती है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी दूसरी हो सकती है. वी कैन टेक एन एग्जांपल for consumer goods such as refrigerator, TV, car, then you can also take an example of scooter. The quality may mean like durability for their products, or like pressure cooker की बात करें या गैस सिलेंडर की बात करें, क्वालिटी में बी टर्म इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी. अगर प्रेशर कुकर फटेगा तो कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर उस प्रेशर कुकर को नहीं लेगा. ठीक है, अगर हम पल्सेस की बात करें या स्पाइसेस की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो उसमें प्योरिटी जो है वो स्टैंडर्ड रहेगा क्वालिटी का. ठीक है, तो फॉर सर्वाइविंग इन द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, to maintain goodwill, the business must supply products with the right quality and with right price. Next point is avoidance of unfair trade practices. So see, there are n number of anti-social and unfair trade practices are there, like for example black marketing, adulteration, hoarding, overcharging, etc. So and one more thing, exaggerating in advertisements about the use of products, it also comes under unfair trade practices. So no society accepts this kind of practices in terms of general level. So with these practices, a businessman will not only lose his reputation but it is punishable under law. So अगर कोई business person या businessman इस तरीके की चीज़ों में लिप्त पाया जाता है तो it is punishable under law. You can go to several consumer forums, consumer courts. The punishment can be in the form of fine, or it can be in the form of imprisonment, or it can be both. So the businessman must have social objectives to avoid these practices for earning profits. Next is employment generation. Employment, yeah, I should say unemployment is one of the biggest problem which our society, Indian society faces. So the businessman must create employment opportunities and help in overcoming these basic problems of developing countries. अगर आप employment दोगे तो उससे poverty खत्म होगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर एक cycle बना लेगा. So the business employs people to perform different types of work, different areas में, different departments में. businessmen क्या करते हैं, people को employ करते हैं. By employing people for work, businessman helps काइंड ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. एक इनकम जो है सोसाइटी से बिजनेस के पास जाती है और बिजनेस से फिर वापस सोसाइटी में आती है. नाउ सी हाउ इट वर्क्स. आपको प्रोडक्ट बनाया किसने? प्रोडक्ट बनाया बिजनेस ने. अब बिजनेस ने थोड़ी ना बनाया, बिजनेस में जो सोसाइटी के एलिमेंट्स लाइक ह्यूमंस, वर्कर्स, उन्होंने बनाया. अब उन्होंने जब प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट किसको दिया? उन्होंने मार्केट में सोसाइटी को दिया. अब सोसाइटी को प्रोडक्ट दिया तो सोसाइटी में लोगों ने उसको परचेज किया, तो इन रिटर्न में क्या दिया? मॉनेटरी वैल्यू या पैसा दिया. पैसा किसके पास गया? बिजनेस के पास गया. बिजनेस ने उस पैसे को क्या किया? बिजनेस ने उस पैसे को इन द फॉर्म ऑफ सैलरी उन एम्प्लॉयज को बांट दिया, जिससे वो पैसा कहाँ चले गया? वापस सोसाइटी में चले गए. ठीक है, सो दिस हाउ इट वर्क्स. It will improve the public image of business. ठीक है, the employees may be imparted training also so that they can update their knowledge and fulfill the demands of a particular job. Next is social service or community service. There are n number of companies like Tata, Reliance, who are going for social services. Like Reliance is going for education, Tata is also going for education and hospitals. They are also going for making parks, building aesthetic services. So there are large business houses who undertake various projects of community services, such as running charitable dispensaries, schools, hospitals, as I have already mentioned some of the examples. The big companies can help in social service programs which have been run by NGOs and government organizations. It can also contribute large amount of funds in the form of donations, charity, etc. So this kind of programs, social service programs, add to the reputation of the company and can also establish a public image. Next is avoidance of pollution. Industrialization has led to major problem of pollution. We all are aware of this fact. The industries throw or drain their waste in lakes,
rivers, etc., but which ultimately pollutes water, which ultimately pollutes soil. The smoke which is coming out from chimneys, it pollutes air and it creates an air pollution. So as a businessman, a person has to stop, or I should say should control the pollution. It is a moral duty for a businessman to come forward and help in solving this kind of problems regarding pollution. So a businessman must adopt environment friendly techniques. ठीक है, it should drain the waste materials in such a way that does not pollute the environment. Next is human or personal objectives. ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में बहुत पर्टिकुलर है. सी ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एक कंपनी से रिगार्डिंग रहते हैं, बिजनेस से रिगार्डिंग रहते हैं. फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस. आप अगर कोई पर्सन आपके यहाँ पर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आपको उसको एक हेल्दी वर्किंग कंडीशंस देनी, हेल्दी एनवायरनमेंट देना जिससे कि वो सही तरीके से एफिशिएंट वे में काम कर पाए. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एंड सेटिस्फैक्टरी सैलरीज. आपको जितना वो पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है उतना ही आपको उसको कॉम्पिटेटिव सेटिस्फैक्टरी या उसको जो वेजेस हैं वो देना जरूरी है. नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सी, personal growth and development can be done with the help of imparting training to employees and keeping updated their knowledge. ठीक है. Next is peer recognition. So what do you mean by peer recognition is, peer recognition means अगर कोई employee कुछ initiative लेना चाहता है या कुछ participation देना चाहता है activities में या किसी चीज में, तो उसको आगे बढ़ाया जाए, या उसकी फीलिंग्स को या उसकी जो एंकरेजमेंट है या उसका जो इनिशिएटिव है उसको रिस्पेक्ट दिया जाए. तो दिस इज कॉल्ड एज पीयर रिकॉग्निशन. तो इससे क्या होगा, वो जो एम्प्लॉय है वो सोचेगा कि नहीं, कंपनी मेरे बारे में सोच रही है. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सोशल या स्पेशल बेनिफिट्स. द स्पेशल बेनिफिट्स कैन बी हाउसिंग फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. सो दिस ऑल आर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो वी हैव स्टडीड, वी आर बेसिकली क्लियर विथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, we are cleared with social objectives, we are cleared with human or personal objectives. Now in the next session we are going to study regarding the classification of business activities. Thank you and have a nice day.